Our top story at the moment, the first flight carrying Indian nationals from Jeddah, the Indian nationals who were stranded in Sudan, 360 of them have now landed in India. What a relief for all of them as they have seen the horrors over the last 10 days in Sudan with many of them being stuck in areas where there was intense fighting. Now the flight, this was a commercial flight from Jeddah carrying 360 Indian nationals, has arrived in India under Operation Kaveri. Welcoming the evacuees, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that India welcomes back its own. Now India has positioned ship as well as IAF C-130J aircraft in Jeddah to bring back the stranded Indians. The ship INS Sumedha has in fact carried these people from Port Sudan to Jeddah, from where they have taken this flight back to India. Let's listen in to some of those who arrived among the 360 today. बहुत गोलाबारी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, लूटपाट सब चल रहा है वहाँ। लूटपाट चल रहा है। आपके साथ सुडान से आया क्या जी? हम 10 दिनों से वहाँ पे फंसे हुए थे। 10 दिनों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, सुडान से आए हैं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का कैसा सहयोग मिला है? हमारे को काफी सपोर्ट मिला है राजस्थान और इंडियन गवर्नमेंट से। और मोस्टली हम कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। और हमारे सुब्रमण्य जयशंकर साहब, उनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और लोग गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि दिवाली के पटाखे चल रहे हो वहाँ पे। वहाँ पे क्या कर रहे थे? सर मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ओमेगा स्टील कंपनी में सीए हैं। तो उनके साथ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली 10 साल से वहाँ स्टे कर रही थी। कब से वहाँ पे स्टे हुई है? एक्चुअली सर वैसे तो 3 साल से कंडीशन खराब थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे 3 साल पहले, लेकिन प्रोटेस्ट था कि आर्मी और लोकल के बीच में, तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। लेकिन अब स्टार्टिंग अचानक से आरएसएफ वालों के बीच में और आर्मी के बीच में स्टार्ट हो गई है। तो उन लोगों ने आपस में गोलियां चलानी, बॉम्ब गिराने, मिसाइलें छोड़नी, ये स्टार्ट कर दिया। स्थिति अभी तो खराब ही है, क्योंकि जो लोग अभी वहाँ अभी इस टाइम में तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप कर दिया है, लेकिन जब शुरू हुआ था उस टाइम अर्ली मॉर्निंग 8:30। कितने दिनों से वहाँ पे चल रही है सर? ये 15 तारीख को शुरू हुआ ना, 15 तारीख को शुरू हुआ। Let's move on now. 11 people were killed in a Maoist attack in Dantewada in Chhattisgarh. Out of this, 10 policemen and 1 driver of a rented vehicle that they were travelling in. They were returning from an anti-Naxal operation when they were ambushed. In a horrific attack, 10 policemen and 1 civilian driver have been killed in a blast carried out by the Naxals in Chhattisgarh's Dantewada around 2 p.m. this afternoon. The district reserve guards team was returning to the district headquarters in a private minivan from Anandpur. The third of the 5 convoy vehicle was the one that was targeted. As per sources, an IED was planted by the Naxals. This was a powerful 50 kg improvised explosive device that left a massive hole on the road and uprooted trees. अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से महोदय द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं 1 सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel said that the state's fight against Naxals was in the final stages and also said that the Naxals will not be spared. जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। अलग अलग वाहनों की सहायता से जब ये डीआरजी जवान लौट रहे थे तो अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए थे। अरनपुर का ही ये इलाका है और इस सड़क में जैसे ही उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, माओवादियों ने पहले से यहाँ पर बारूदी सुरंग प्लांट कर रखा था और जैसी गाड़ी यहाँ पे पहुँची तत्काल उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। Since 2010, there have been major attacks every few years by Naxals in Chhattisgarh.
On 21st June in 2022, 3 CRPF jawans were killed in a Naxal attack at the Chhattisgarh-Odisha border. On the 4th of April in 2021, 22 security personnel were killed in Sukhma. In March, the year before that, 17 security personnel and 8 DRG men were killed in Sukhma. In April 2017, 24 CRPF men were killed in Sukhma in an attack on the patrol party. In May 2013, 25 Congress leaders, including the state chief, were killed. In April 2010, 76 CRPF men were killed in a Naxal ambush. While the Union Home Minister Mr. Amit Shah spoke to the State Chief Minister Mr. Bhupesh Baghel and took stock of the situation and assured all sorts of help. But the main question remains that would enough be done so that future incidents like this can be prevented? With Anurag Dwari, Vikas Tiwari and Neeta Sharma, Bureau Report, NDTV. Now it's day 4 of the wrestlers' protest in Delhi who are demanding action against the WFI former chief Brij Bhushan Sharan Singh for the alleged sexual harassment charges against him. While the protests continue, the protesting Olympians were seen on Wednesday morning at Jantar Mantar exercising. The Supreme Court yesterday issued a notice to the Delhi police on the complaints requesting an urgent hearing and the registration of a police case, that is an FIR specifically in the matter. इमोशनल अपील करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ का नारा लगाते हैं। आप लोग क्या ये चाह रहे हैं कि वो आपको जिस तरह आपके मेडल जीतने पर घर पे इनवाइट किया था, बातचीत हुई थी, सुना था, उसी तरह से आज भी आपको बुला करके आपकी बात सुने, यही आप चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही चाहते हैं हम कि एक बार कम से कम बुला के हमारी बात तो सुने। हमारी मतलब जो हम सच्चाई बोलना चाहते हैं कि आप तक उन तक नहीं पहुँच रही हो, तो वो अपनी जाके उनसे बात करना चाहते हैं, हमारी बात सुने। Let's move on now to some other stories we are tracking. China's Defense Minister General Ri Shangfu will be in India in the next 24 hours. The first visit of a Chinese Defense Minister to India since the Galwan Valley clash of 2020. Significantly, India has turned down a structured bilateral meeting on the other side between External Affairs Minister S. Jaishankar and his Pakistani counterpart Bilawal Bhutto Zardari. Bilawal Bhutto Zardari will be here in May in person for the SCO Foreign Ministers meeting in Goa. Meanwhile, Chinese President Xi Jinping called up Ukrainian President. The two had a conversation which was called or described rather as long and meaningful by President Zelensky. This as Beijing is ramping up efforts to position itself as a potential peacemaker. 157 new nursing colleges and medical colleges, 157 new nursing colleges that have been cleared by the cabinet. New nursing colleges are going to be attached to medical colleges. This will be a 2-year deadline of 15,700 nurses that are going to be trained every year. New medical device policy has also been cleared. एक महत्वपूर्ण निर्णय किया गया है। ये निर्णय है देश में 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। Let's turn our attention now to politics down south, where Tamil Nadu finance minister who has denied now the audio clip that has been released by the BJP. PTR has said that it's fabricated and machine generated audio clip, though Tamil Nadu BJP chief Annamalai has tweeted new audio clips against the DMK. This is unverified voice which slams the lack of system in DMK is being attributed to PTR. DMK bashing clip allegedly with the voice of PTR on it, something that he has vehemently denied now. The ruling party in Tamil Nadu, the DMK, is facing perhaps its worst crisis in its second year.
On one hand, these audio recordings released by the state BJP chief allegedly show the finance minister exposing the corruption by his boss, the chief minister and his family members. On the other, the income tax department is searching for the third day a realty firm reported to have connections with the chief minister's family. Today, the finance minister, known as PTR, flanked by a picture of the chief minister, released a new video in his defense, alleging the two audio clips are deep fakes. It included an NDTV report on how deep fakes work. This is Manoj Tiwari in English, making a similar appeal. Sri Ram, greetings to all. Except there is a catch. As Vice News reported, these are deep fakes. So they are indulging in using advanced technologies and cheap tactics such as releasing these fabricated audios to disrupt our good work. There is a desperate attempt by a blackmail gang to achieve their political ambitions by creating a rift within us. Such cowardly attempts will never succeed. Tamil Nadu BJP President Annamalai alleges the DMK is crumbling within, and this purported audio substantiates his claim of huge corruption in the state. But whatever stated by PTR is not new, which is known, and that family which runs the party as a dynasty is known to swindle public money for the family benefits. Sources say that there are at least 3 more audio clips with Tamil Nadu BJP which the party is planning to make it public in due course. ADMK has also moved CBI seeking an investigation into the audio clips and also its contents. Sensing that the party is losing the perception battle, DMK chief MK Stalin met senior ministers of his government over this issue. Sources say very soon there will be many changes in the government, including a cabinet reshuffle. With camera person Xavier Thomas, this is Arvind Gunasekar from Chennai for NDTV. Now to the battleground Karnataka, where it was a power-packed day for both the BJP and the Congress. First, the BJP, where Defence Minister Rajnath Singh, Finance Minister Nirmala Sitharaman were in Kalburgi and held several meetings there, as well as door-to-door campaigns. Chief Minister of Uttar Pradesh Yogi Adityanath and of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chauhan were also campaigning in Karnataka, UP CM in Mandya and then in Vijaypura. Now, Shivraj Singh Chauhan was in Ramdurga Assembly constituency in Belgavi. आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी। ये कांग्रेस की असलियत थी। And now to the other side, that is the Congress, where Priyanka Gandhi led the Congress's charge in Karnataka. Congress General Secretary Priyanka Gandhi tried her hands at dosa making as well in Karnataka's Mysuru. There was a roadshow by Priyanka Gandhi at Hiriyur, a constituency that has been the stronghold of the JDS. Well, and while the BJP government in Karnataka brought in a new reservation quota for the state, removing the 4% quota for Muslims, now with the countdown to the polls, Congress party Siddaramaiah in a tweet has said that the party is committed to increasing the reservation limit from 50% to 75% and to increase reservation to all caste based on their population. Now, let's quickly listen in to my colleague Veera Raghav, who spoke with JDS Chief Devagowda about the possibility of an opposition unity ahead of the polls. What is your thought on opposition unity, sir? No, opposition unity I cannot say because I have not told the state. Only Kumaraswamy has got West Bengal and Telangana, and he was also concentrating only in Karnataka because the time is very short, and only after the assembly election is over he can think of approaching the other friends, not now. The Bihar government is facing a huge backlash for its decision to tweak prison rules, allowing the release of 27 convicts, including gangster politician Anand Mohan Singh, who was facing life in prison
for the murder of Dalit IS officer in 1994. Anand Mohan Singh was convicted for murder. The murder of the then Gopalganj district magistrate G. Krishnaiah was killed by a mob allegedly provoked by Anand Mohan Singh. G. Krishnaiah was attacked by a mob protesting with the body of Chotan Shukla, another gangster politician of Anand Mohan's party who was killed a day earlier. NDTV gets you an account of the attack as the killer walks free. Here is the driver speaking to my colleague Tanushri Pandey. ऐसे तो हम लोग मैंने मुजफ्फरपुर होकर पटना गए थे, हाजीपुर गए थे मीटिंग में, तो इधर से जुलूस जा रहा था। अब किसका जुलूस था ये नहीं बता सकते। तो अपना गाड़ी साइड से लेकर चले रहे थे, तो एक बैग आगे पीछे सब लोग घेर लिया। हाँ। अब घेर लेने के बाद से गाड़ी के प्रचार पर से घेर लिया लोग। हाँ। उसके बाद से बॉडीगार्ड वो खींचा गया। क्या हुआ उसके बाद? बॉडीगार्ड को खींच लिया लोग। बॉडीगार्ड को खींच लिया। अच्छा। जी। हाँ। उसके बाद गाड़ी पर हाथ हो तो सब चलाना शुरू कर दिया, तो हम साहब को लेकर भाग गए। हाँ। साहब को भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए हम साहब के साथ में। हाँ। आप साहब को लेके गाड़ी में निकल लिया आगे? जी। ठीक है जी। बॉडीगार्ड छूट गया था। हाँ। बॉडीगार्ड खींचा गया तो छूट गया। हाँ। तो फिर आगे भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए तो साहब गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे, साहब गाड़ी रुकवा दिए। साहब गाड़ी क्यों रुकवाए? पता नहीं, अब काहे रुकवा दिए, बॉडीगार्ड छूट गया था उसके चलते। हाँ। तो गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे। हाँ। और फिर आगे पीछे सब भीड़ घेर लिया। ओहो। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस साहब को उधर हमको गाड़ी में गर्दन सब दाब दिया था। आपकी गर्दन स्टेयरिंग में ऐसे करके दबा दिया था? जी। और साहब को निकाला पीछे से गाड़ी से? जी। और फिर उसके बाद? अब उसके बाद क्या, अब हमारे गर्दन में साहब 2-3 फाइट मारा लो, कान पर मारा लो। हाँ। कान पर चोट लगा तो कम सुनाई देना हुआ, अभी भी कम में सुनाई देता है। अच्छा, माफी चाहूंगी मैं। नहीं, आपके सामने उसके बाद क्या हुआ? कृष्णैया साहब के साथ क्या हुआ उसके बाद? अब तो साहब को उधर खींच लिया तो हम लोग सब माने 3 आदमी 3 खल के हो गए। अच्छा। साहब किधर है? हाँ। हम किधर, हमको मारना शुरू किया तो हम लोग रोड की तरफ भागे। हाँ। साहब उधर भागे। हाँ। उसके बाद आगे भागते गए हम, फिर उधर से लौट के आए तो देखे गाड़ी उल्टा हुआ है। भीड़ मन चल गया था। हाँ। तो लौट के आए तो गाड़ी उल्टा हुआ है। उसके बाद साहब को देखे कि खाई में नीचे हाँ। पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने देखा कि साहब खाई में नीचे पड़े हुए हैं। आप गए उनके पास? आपने अपने आँख से किसी को देखा था वहाँ पे साहब को मारते हुए या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, और आप जब आए, आपने जब साहब को देखा नीचे खाई में, तो आप गए उनके पास? आपने क्या साहब नहीं जीवित? सीधा गाड़ी DSP की गाड़ी आ रहा था। हाँ। वही जुलूस की तरफ जा रहा था तो वो गाड़ी को रुकवाए। हाँ। उसको बोले कि सर हमारे गोपालगंज का है। हाँ। वही गाड़ी पर लाद के हॉस्पिटल लेके गए। Let's move on now. 11-time LMLA, 5-time Chief Minister of Punjab. He was the youngest and the oldest Chief Minister of the state. Prakash Singh Badals' final rites will be conducted on Thursday. The centre has announced 2 days state mourning. Prime Minister Narendra Modi paying his last respects to Prakash Singh Badal. Though now at the other end of the political spectrum, after the Akali Dal broke ties with the NDA, the Prime Minister shared a warm relationship with Mr. Badal. People thronged the Akali Dal headquarters to pay their last respects to the 5-time Chief Minister of Punjab, who started his career as a Sarpanch and became the youngest MLA at 25. He was a titan in the politics of Punjab. Always accessible to people, he preferred to stay at the home of party workers rather than in government inspection bungalows or circuit houses, probably a key to his success and popularity. बहुत कुछ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ Badal's legacy in making breakthrough alliances to bring the Shiromani Akali Dal at the center of the political space will be remembered.
बहुत ही कदावर लीडर थे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इसके बराबर कोई लीडर नहीं था। और इन्होंने जो मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं वो कोई भूल नहीं सकता। गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। एक युग का आज अंत हुआ है। His last election in 2022 at the age of 94, when he fought the Vidhan Sabha election from Lambi because his party wanted him to take on the challenge of new entrants AAP. The party was hoping his face would help them beat the magic of AAP. But that was not to be, and Badal accepted the defeat with folded hands. Prakash Singh Badal's funeral will be held in his ancestral village of Badal in Muktsar district on Thursday.